Now let us solve section C. In section C, I will be only solving the numerical problem. The first problem is, the following staff readings were observed successively with a level. The instrument have been moved after 3rd, 6th and 8th reading. The instrument have been moved after 3rd, 6th and 8th reading. 2.228, 1.606, 0.988, 2.090, 2.864, 1.262, 0.602, 1.982, 1.044 and 2.684 meters. Tabulate a level field book and calculate the reduced level RL of point. If the first reading was taken with a staff held on a benchmark of 432.384 meter. So we will be solving this numerical. First of all, we have to make a table like this. Station, BS, IS, FS, HI and RL remarks. Here, it is not stated that we have to solve this question by rise and fall method or HI method. So, we will be solving this by HI method. BS reading, IS, FS reading. Okay. 2.228, 1.606 second. Third reading is 0.988. After third reading, instrument is shifted. So, IS 2.090. FS 2.864. This is 6 reading 1.262. This is 7 0.602, 1.982, 1.044 and 2.684. HI will be calculated as, the formula of HI will be RL plus BS. RL plus BS. So RL is 432.384 plus BS 2.228. This HI will be get by this formula, 432.384 plus 2.228, we will get 434.612. After that, this HI minus this FS, this will be the RL. Then this RL plus this BS will give new HI. This HI minus this IS will give RL. This HI minus this FS will give RL. Then this RL plus this FS, this BS will give HI. This HI minus this FS will give RL, and this RL plus this BS will give this HI. This HI minus IS value give RL. This HI minus FS value give RL of this point. So this is the last RL and this is the first RL. The check will be summation of BS, that is the whole value. Summation of BS will be 6.64, 6.460. Summation of FS 7.756. Last RL 431.088 minus 432.384 will be 1.296 minus 1.296. This is the check. Second question is of the curve. Here the radius value is given as 200 meter. Deflection angle is 65 degrees. We have to calculate the degree. So the formula of degree will be, degree is equal to 719 by radius. 1719 by radius. 1719 by 200 gives the degree value. Length of curve will be, if we assume the length of arc or chord as 30, then 30 into delta. This delta is the deflection angle delta by D is the degree of curve, and this is the deflection angle. So 30 into 65 degree upon 8.595 will give us the length of curve. Tangent length formula होता है r into tan delta by 2 and delta is 65. tan की वैल्यू निकालेंगे, r से इंटू कर देंगे. Length of long chord 2 into r into sin delta by 2. 2 into 200 into sin delta by 2. Apex distance r bracket में sec delta by 2 minus 1. Okay. Mid ordinate r 1 minus cos delta by 2. Numerical question is of finding out the length of the ground coordinates. Here in this question, focal length of 250 mm is given, flying altitude of 2,800 meters is given. Here point P and point Q is being photographed. The height of the point P above datum is given as 700 meters. The height of the point Q above datum is given as 300 meters. The photographic coordinate X and Y are given. P coordinate 4.65 centimeter, 3.54 centimeter, Q coordinate minus 2.50 centimeter,
and plus 6.59 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट कि ये ग्राउंड में P और Q कितनी दूरी पे है, लेंथ ऑफ PQ. तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं मैंने. हम लोग को फोटो कोऑर्डिनेट तो पता है लेकिन ग्राउंड कोऑर्डिनेट नहीं पता है. ग्राउंड कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये है XP, कैपिटल XP हो जाएगा हमारा. ये जो पॉइंट है P, इसका ग्राउंड कोऑर्डिनेट X पॉइंट, YP पता चल जाएगा. XQ कैपिटल X बताता है ग्राउंड कोऑर्डिनेट, कैपिटल YQ. H हो जाएगा आपका फ्लाइंग एल्टीट्यूड माइनस स्मॉल HP क्या होता है, हाइट ऑफ P अबव डेटम. स्मॉल f है फोकल लेंथ और स्मॉल xp है हमारा ये फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट. ऐसे ही कैपिटल XQ निकालने के लिए H माइनस HQ. HQ क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट Q अबव डेटम. स्मॉल f है हमारा फोकल लेंथ और XQ, ये यहाँ पे हमें XQ गिवन है ना माइनस 2.50. यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है. सबको मीटर्स में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने 250 mm को 10 की पावर माइनस 3 से इंटू कर दिया है. ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो इसको 10 की पावर माइनस 2 से इंटू कर दिया है. XP, XQ, YQ निकाल लिया है. लेंथ ऑफ PQ का फॉर्मूला होता है XP माइनस XQ का होल स्क्वायर माइनस YP माइनस YQ का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 528.757. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये माइनस का दिया हुआ है 2.50 सेंटीमीटर, तो मैंने इसका ये माइनस लिया हुआ है और माइनस यहाँ पे भी रखा है. जब मैंने यहाँ पे ये किया है कि XP माइनस XQ, तो इसका ये माइनस मैंने रिटेन किया हुआ है. ऐसे ही आप जहां जहां माइनस है उसको रिटेन करोगे. Thank you for watching.